नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुलकर्णी, इस लोकसभा का अध्यक्ष। यह उपस्थित सभी मान्य सदस्यों का मैं आदरपूर्वक स्वागत करता हूँ। यह सभा शुरू करने से पहले हम आज की कोरम को चेक कर लेनी चाहिए और इसके अनुसार यहाँ 15 लोग उपस्थित हैं, तो हम यह सेशन शुरू करेंगे। तो इस सेशन में पहला अवर होगा प्रश्नकाल। इसमें अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स को प्रश्न पूछेंगे और रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स को उस सवाल का जवाब देना चाहिए। अब हम यह सेशन शुरू करेंगे। पहले हमारी महानीय प्रधानमंत्री श्री तरुण जी को सरकार की सफलता, देश की उन्नति और कोविड-19 कंडीशंस के बारे में बोलने की अनुमति देते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के प्रेरक उद्बोधन पर आभार प्रस्ताव की चर्चा में शरीक होने के लिए और राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए कुछ बातें प्रस्तुत करूंगा। अध्यक्ष महोदय, now people have changed the government is not the case. Their interests are also expected to change and due to the desire to work with a new vision, हमें एक नई मौका मिला है। और अगर हम उसी 70 साल पुराने रास्ते पे चलते तो आज आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर से नहीं हटती। उसी रास्ते पे तो 3 तलाक की तलवार मुस्लिम बहनों को डराती थी, लेकिन हमने इस एक्ट को क्रिमिनलाइज किया है। अगर हम उसी रास्ते पे चलते तो आज असॉल्ट ऑन माइनर्स पर स्टैंड नहीं ले सकते। अगर हम उसी सोच को परस्यू करते तो आज राम जन्मभूमि का प्रसिद्ध मंदिर अभी डिस्प्यूट में होती, और अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट जैसे अप्रोच करते तो आज करतारपुर कॉरिडोर कभी नहीं बनती। और अगर हम उसी रास्ते को इस्तेमाल करें तो आज भारत बांग्लादेश की बॉर्डर डिस्प्यूट कभी नहीं सुधरती। अध्यक्ष महोदय, नो वन कैन डिनाई दैट द कंट्री हैज बीन टेकिंग ऑन अ चैलेंज एवरी मोमेंट। कभी कभी चैलेंजेस की तरफ ना देखने की आदत भी देश ने देखी है, और हमने ऐसे लोगों को भी देखी है जिनको एबिलिटी नहीं है चैलेंज चूज करने की। लेकिन आज जो देश पे एक्सपेक्टेशन है, अगर हम चैलेंज को चैलेंज नहीं करते, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाते और अगर हम साथ बढ़ने की गति नहीं बढ़ाते, तो कल हमारे देश को कई समस्याओं को झेलना पड़ता है। और इसके बाद अध्यक्ष महोदय, और अगर हम उसी रास्ते को इस्तेमाल करें जिसने जिनको पिछले सरकारों ने यूज की, तो आज 50 साल बाद भी देश को एनिमी प्रॉपर्टी पर लॉ के लिए इंतजार करना पड़ता। 35 साल बाद भी देश को एक नई जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए इंतजार करना पड़ता, और 28 साल बाद भी बेनामी प्रॉपर्टी लॉ वुड नॉट हैव कम टू फोर्स, और 20 साल बाद भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वुड नॉट बी अपॉइंटेड। अध्यक्ष महोदय, ये कोरोना काल एक कसौटी का काल था, जिसमें सच्ची कसौटी कब तब होती है जब सच्चा संकट होता है। सामान्य स्थिति में ये बात बहुत जल्दी विचार में नहीं आती है, लेकिन ये दुनिया के बड़े से बड़े देश भी इससे बच नहीं सके। लेकिन ये भारत जैसे देश में है जहां 75% से ज्यादा लोगों को अपने घर के सामने राशन को पहुंचा गए रहे थे, और यही भारत जैसे देश ने 2 लाख करोड़ तक की फाइनेंशियल एड, जनधन अकाउंट्स, मोबाइल ट्रांसफर्स, आधार कार्ड के थ्रू पहुंचा दिए गए थे। और इसको कहते हुए हमारा एफर्ट्स रहेगा कि सभी सिटीजन्स को फाइनेंशियल और मेडिकल एड प्रोवाइड करता रहना और इन मुश्किलों के समयों से जीतना। कोरोना के पीरियड में हमने 3 फॉर्मूलाज को इंट्रोड्यूस किए हैं। ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स काफी महत्वपूर्ण हैं। टू रिवाइव द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हमें जरूर एफर्ट्स डालना होगा। इस दिशा में हमने हॉनेस्ट अटेम्प्ट्स दिए। द फ्यूचर चैलेंज इन एग्रीकल्चर आर ब्रॉट टू लाइट बाय एमिनेंट एक्सपर्ट्स, और इसीलिए हमने किसी देरी ना करते हुए अटेम्प्ट्स दिए। अध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से विश्वास के साथ एक प्रगति के वातावरण में देश को आगे ले जाने का निरंतर प्रयास चलता रहेगा। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभारी हूँ कि अनेक विषयों पर उन्होंने स्पष्ट किया है जिनका राजनीतिक एजेंडा है। उनको मुबारक, हम देश के एजेंडा को लेकर चलते हैं और देश का एजेंडे को लेकर चलते रहेंगे। और इसके बाद हम उन सभी एथलीट्स को बधाई देते हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास दिया और हमारे भारत का नाम रोशन किया। और अब मैं फिर एक बार देश के किसानों से विनती करूंगा कि आइए हम साथ मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढे। और इसी अपेक्षा के साथ मैं फिर राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद तरुण जी।
अब मैं फाइनेंस मिनिस्टर श्रीरक्षा जी को इस साल की बजट प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देता हूं। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2021 to 2022. The preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. This moment in history is the dawn of the new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I would like to mention that this budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget that has happened with all your support. I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. I wish to lay a vision for Atmanirbhar Bharat. The proposals in this budget will further strengthen our sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, opportunities for youth, education for all, women empowerment, and all-inclusive development, among others. The budget proposals for 2021 to 2022 rests on six pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and the sixth, minimum government and maximum governance. First pillar, we focused on strengthening three areas: preventive, curative, and well-being. A new centrally sponsored PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana will be launched on an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will be in addition to the National Health Mission and will support 17,000 rural and 11,000 urban health centers. Mission Poshan will be launched to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts. Jal Jeevan Mission will be launched. It aims at universal water supply. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2.87 lakh crores. Second pillar, ports and shipping. An amount of 1,624 crores will be provided over 5 years. This initiative will enable greater training and employment opportunities for Indian seafarers, besides enhancing the company's share in global shipping. Recycling capacities of around 4.5 million LDTs will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for the youth. National Rail Plan for India 2030 aims to bring down logistic costs to enable Make in India. Third pillar. Early this year, PM had launched the Swamitva scheme. Under this, a record of rice is being given to property owners in villages. About 1.80 lakh property owners in about 1,241 villages have been provided. Thus, I propose during 2021 to 2022 to extend this to cover all states and union territories. To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores this year. Financial inclusion. To further facilitate under the scheme of Stand Up India for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Women, I propose to reduce the margin money requirement from 25% to 15% only, and to also include loans for allied activities in agriculture. In this budget, I have provided 15,700 crores to medium, small and micro enterprises, MSME sector. Fourth pillar, I propose to increase the unit cost of each tribal school from 20 crores to 38 crores. This would help in creating robust infrastructure for our tribal schools. Fifth pillar, we will launch Deep Ocean Mission with a budget outlay of 4,000 crores over 5 years. The National Research Foundation outlay will be of 50,000 crores over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem in the country is strengthened. Sixth pillar, the forthcoming census would be the first digital census. For this milestone, I have allocated 3,768 crores in this year 2021 to 2022. I propose to provide 1,000 crores for the welfare of tea workers. To ensure that the economy is given the required push, ABI estimates for expenditure are 34.83 lakh crores. This includes 5.5 lakh crores as capital expenditure. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this House. धन्यवाद श्री रक्षा जी। प्रश्न संख्या 001, अपोजिशन पार्टी के किरण जी, आप
आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी को मेरा धन्यवाद। I, Kiran, being from the opposition party, would now like to pose a question to the finance minister. The question goes like this. Are you willing to consider any alternative solutions to the current economic crisis that help our lives, like reducing and redistributing work hours, for example? And would you and your party would be willing to offer financial incentives to companies that took this step? Thank you, Honorable Speaker. अब मैं श्रीरक्षा जी को इस सवाल का जवाब देने की अनुमति देता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. Our government is providing a good environment for economy's reset. We will create more job opportunities. For example, we will double the recycling capacities to generate additional 1.5 lakh and 5 lakh jobs and thus wealth. We will also be willing to offer incentives to companies and have also allocated 15,700 crores only to the MSME sector this year. We would be disposed to give loans to we will also be disposed to give loans to industrialists to revive our fiscal positions, and our government is always here to help. धन्यवाद श्रीरक्षा जी। अब मैं डिफेंस मिनिस्टर भोवी जी को देश की सुरक्षिता के बारे में बोलने की अनुमति देता हूं। अध्यक्ष महोदय प्रणाम। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहती हूँ कि द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी DRDO है has developed a detect and destroy technology for drones, but it is not yet into mass production और इसके लिए the government is taking up action और जल्द ही हमारे सारे डिफेंस क्षेत्रों में ये जारी रहेगा। और रही बात हमारी मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजीज की, the armed forces have been inducing capacity जो नेवी को ऑलरेडी 2 सी गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन्स यूएसए से लीज हो चुकी है एंड द 3 forces want 30 more of these UAVs between them. The military has been working towards using small drones for offensive capabilities as to display pre-programmed drones destroying a variety of stimulated target. And this is reflective of our seriousness and focus on this emerging technology. The weapon system that will be delivered to the military between 2021 and 2023 include Beyond Visual Range (BVR) missiles, India's first anti-radiation missile, anti-tank weapons, anti-drone system, guided bombs, and anti-airfield weapons. Several of these systems have been tested and demonstrated indigenous development. हमने 70,221 करोड़ यानी 63% मिलिट्री के कैपिटल बजट 2021-22 को इन्वेस्ट किया है फॉर बाइंग लोकली प्रोड्यूस्ड वेपन्स एंड सिस्टम टू पोस्ट डिफेंस इंडिजिनाइजेशन और पिछले साल 51,000 करोड़ यानी 58% कैपिटल बजट को डोमेस्टिक परचेज पे इन्वेस्ट किया है। जैसे DRDO ने बताया है, the Astra BVR missile will be available to the armed forces this year. The Quick Reaction Surface to Air Missile System (QRSAM), Nag और Helena anti-tank missiles with an effective 5 km range, the Air Defense Fire Control Radar (ADFCR) इसमें included होंगे। हेलिना और नाग मिसाइल्स को ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर माउंटेड करेंगे। India के first anti-radiation missile with Rudram will be ready for induction by 2023. The Smart Anti-Airfield Weapon SAAW will also be ready in 2 years और इस weapon की रेंज 100 किलोमीटर है। IAF की Jaguar फाइटर प्लेन्स और Hawk Mk-132 पर ये टेस्टेड फायर होंगे। रशिया ओरिजिन Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ इन्हें जोड़ा जाएगा। वैसे ही imports have traditionally accounted for 60 to 65% of the country's military requirements, जो कि भारत ने पिछले 10 सालों में $billion वर्थ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है for fighter jets, air defense missile system, submarine hunter planes, attack helicopters और heavy lift choppers, जिससे हमें हमारे एक्सपोर्ट्स के बारे में पता चलता है। और इसके साथ साथ हमारे मैन पावर जो है पैरा SF 1 to 12 और 21, मार्कोस एंड गरुड़ कमांडो फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ाया है। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ISC विक्रांत लौट चुका है। After the 5-day sea trial, and this was to test the performance of the 40,000-ton warship,
IISc Vikrant, that is built at the cost of around 23,000 crore, 4th August को कोच्चि से विदा लिया है for the crucial sea trials ahead of its planned induction into the Indian Navy by August next year. And to say about the India-China disputes, the Chinese commanders have agreed to a speedy resolution of outstanding issue on the line of actual control (LAC) at the 12th round of military talks held with us in Ladakh. Some progress was made during the talks, and we are inching towards working out a disagreement plan for Hot Springs and Gogra. We are looking forward to positive outcomes in future talks. We have around 50,000 to 60,000 troops in the Ladakh theatre, and they are constantly engaged in the patrolling activity. कौन लोग मौजूद है? इन्होंने बताया है कि इंडियन आर्मी के तो लोग तो है ही इसमें नेवी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, हमारे स्काउट्स मौजूद है, आईटीबीपी के लोग हैं, एचएएल और डीआरडीओ के लोग हैं इनके अस्त्रों के लिए, यानी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और इस प्रकार की एकता यहाँ पर हो तो कौन दुनिया के ऐसी फोर्स को पराजित कर सकता है? और जो मिलिट्री ने कमेंडेबल काम किया है इन सालों में, सारा देश आप लोगों की तारीफ कर रहा है और आज तक भारत को किसी ने आंख नहीं दिखाया है, और अगर कोई भारत को आंख दिखाता है तो वो भी भारत को स्वीकार नहीं, और इस जरूरी पड़ी तो हमारे सैनिकों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी दे सकते हैं। ये बताते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भूवी जी। प्रश्न संख्या 002 अपोजिशन पार्टी के करण जी, आप आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। Defense Minister of India. So my question is there was an attack on Jammu. What had happened? What are the safety precautions and protocols you have taken as a Defense Minister of India to defend our country against the terrorists? अब मैं भूवी जी को इस सवाल के जवाब देने की अनुमति देता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ऑपोजिशन पार्टी के करण जी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही हमारे मिलिट्री ट्रूप्स spotted 2 drones around midnight separately flying over the Kalachuk military base on the outskirts of the Jammu city, हमारे सैनिकों ने immediately हाई अलर्ट होकर क्विक रिएक्शन टीम्स ने फायरिंग शुरू की है, और इसमें 2 सैनिक थोड़ा घायल हुए थे स्फोटक की वजह से, और बिल्डिंग्स पर माइनर डैमेजेस हुआ था, लेकिन आर्मी इक्विपमेंट्स को कोई नुकसान होने नहीं दिया गया है। And as far as the Taliban are concerned, moreover, India has never had strategic interest in Afghanistan's internal affair. So far, we have had a very good alliance with the Afghanistan government. And the Taliban, after the discussion we have had with them, they have promised us not to bother and harm us in any way. But we cannot be 100% sure about people who can't treat their own people right. Therefore, hence, Indian soldiers have been sent on a special training to combat terrorism. And as we all know, we have a solid air force, and the saying goes, the one who rules the sky rules the war. And to conclusion to your question, जैसे मैंने मेरे पिछले भाषण में बताया था, हम हमारे देश की बेहतरीन के लिए सारे जरूरी क्रम ले रहे हैं। धन्यवाद। की नई एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम के बारे में बोलने की अनुमति देते हैं। Honorable Speaker, sir, I would like to present the new board examination policy which has been formulated by CBSE board. The new policy is formulated in view of the COVID-19 pandemic and how it has disrupted the current and last academic session in schools. Cancellation of the CBSE board exams in 2021 this year leads to the formulation of the new examination policy of the board, which suggests conduction of the board exams twice in the upcoming academic year with only 50% syllabus in each term. We have consulted stakeholders such as teachers, parents and students before announcing the new policy for the board examination. We have planned this policy by keeping in mind the pandemic situation and the lack of offline teaching for students.
The board has also considered the concerns regarding the different availability of electronic gadgets, connectivity and effectiveness of online teaching, and other socio-economic issues with respect to students of weaker sections and those residing in far-flung areas of the country. Changes in the CBSE exam pattern 2021-22. The syllabus of the board examination 2021-22 will be rationalized into Term 1 and Term 2. Term 1 examination will be held in November-December 2021. The duration of the paper will be for 90 minutes in MCQ format and it will cover only the rationalized syllabus of Term 1. Term 2 examination will be held in March-April 2022. The paper will be for 2 hours in descriptive format and it will cover the remaining rationalized syllabus of Term 2. Clarification on uncertainties. If school opens for both the terms, Term 1 and Term 2 examination will be conducted at schools. The examination will be conducted in the school under the supervision of external superintendents and observers appointed by CBSE board. Theory marks will be distributed equally between the two terms. If school remains closed for the first term and opens for the second term, Term 1 will be conducted online from home. Term 2 will be conducted at the centers as per the guidelines issued under the scheme. Weightage of Term 1 for final score would be reduced and weightage of Term 2 will be increased for declaration of final result. If school opens for Term 1 and remains closed for Term 2, exams will be conducted for Term 1 with internal assessment taking into consideration. Result will be based on the performance of student of Term 1. In case the situation is not conducive for normal descriptive examination, a 90 minutes MCQ based exam will be conducted at the end of Term 2 also. If school remains closed for both the terms, both the term exams will be conducted online manner from home. Result would be computed on the basis of the internal assessment, project and practical work. These are some of the changes brought in the examination policy of the CBSE board. I would end my statement by saying that education is the #1 priority of a child and our government would thrive to provide education to every child in the country. धन्यवाद वैष्णवी जी। प्रश्न संख्या 003 अपोजिशन पार्टी के तेजस जी, आप आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। Thank you, Honorable Speaker, for allowing me to pose this question. Adaraniya Shikshana Mantri Vaishnavi H. My question to you is actually too far-sighted but extremely necessary. So recently there was a reverse brain drain in India where 80% of the Indians in foreign countries came to India within a span of 2 to 3 months. Should we be smiling? No, no. It is due to COVID, not due to our government. So as soon as the devil called COVID goes, everyone goes back in greed of money, job, amenities, etc. So what are the measures you have taken is what I want to know to control our next generation, Gen Z, from going to the foreign countries, and how will you attract back the millennials and the late Gen X back to India is my question. Thank you, Speaker. अब मैं वैष्णवी जी को इस सवाल के जवाब देने की अनुमति देता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारत के शीर्ष 500 छात्रों को रुपए की छात्रवृत्ति की पेशकश की जाएगी। पीएम छात्रवृत्ति योजना के हिस्से के रूप में 75,000 दिया जाएगा। मौजूदा संस्थानों को गुणवत्ता को ऊपर उठाने और उन्हें विश्व स्तरीय संस्थानों की सूची में ले जाने की भी प्रयास किया जा रहा है। दुनिया में QS शीर्ष विषयवर और QS विषयवर सूची जैसे सूचियों में अच्छी रैंकिंग हासिल करना भी मंत्रालय का एजेंडा है। इस तरह छात्र भारतीय संस्थानों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित महसूस करेंगे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से योग्य संख्या संसदों को शामिल करने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी किया जा रहा है। छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में एक सेमेस्टर का अध्ययन करने का अवसर दिया जाएगा। शोध कार्यक्रमों में अधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण आविष्कारों के साथ अनुसंधान निवेश भी किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं
हेल्थ मिनिस्टर शर्वेश जी को कोविड के बारे में नियंत्रण के लिए मार्गसूची देने की अनुमति देता हूं। धन्यवाद माननीय स्पीकर। मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसमें कोविड का सेकेंड वेव में नंबर ऑफ केसेस 4 लाख का पीक वाज टच्ड। उसमें पीपल लेस देन 20 इयर्स वर अफेक्टेड, लेकिन इस बार एक्सपर्ट्स कंफर्म दैट थर्ड वेव में मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन अफेक्ट होता है। उनमें 80% will experience mild illness, 14 से 15% will have moderate or severe disease, remaining 5% में critical illness will be seen. Earlier reports में 60 years plus लोगों को severe illness का symptoms was seen, लेकिन इस थर्ड वेव में 20 साल के नीचे लोगों को वैसे symptoms दिखाई देगा। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म कर दिया, इस थर्ड वेव बच्चों को बहुत थ्रेटनिंग होता है। अब हम थर्ड वेव का स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को डिस्कस करता हूं। पहला, हम सभी फर्स्ट और सेकेंड वेव का कॉमन प्रिकॉशंस लाइक वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, वेयरिंग मास्क बिफोर गोइंग आउट ऑफ द हाउस एक्सेट्रा जैसे सिंपल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब इस बार हमारा एक ही वेपन सोशल डिस्टेंसिंग, होम क्वारंटाइन और वैक्सीनेशन। कितना जल्दी देश का सभी लोग वैक्सीनेट होता है, इतना जल्दी हम कोरोना को हटा सकता है। नाउ कमिंग टू वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हम पर्टिकुलर स्टेट्स को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइमरी इंफॉर्मेशन लाइक कितने डोज, किस दिन वैक्सीन सप्लाई होता है, वैसे इंफॉर्मेशन विल बी गिवन। बाद में ओ स्टेट्स ने वैक्सीन स्टोर करने का प्लेस डिसाइड करने के बाद हम वैक्सीन को डिलीवरी करता हूँ। ओ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव्स ने किस दिन किस सेंटर्स में क्या कॉम्बिनेंट का वैक्सीन विल बी गिवन का इंफॉर्मेशन विल बी अनाउंस्ड टू पब्लिक। In this way, vaccination process will happen. According to my knowledge, more than 39.59 crore vaccine dose ने states और union territories को supply कर दिया। उसमें 30,250 doses are still in the pipeline. Remaining with wastage is 38.07 crore. अभी तक 1.51 crore vaccine are still available with some states in divided manner. अब हमारा देश का प्रमुख states like अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, मेघालय जिसमें कोविड-19 का स्प्रेड रेट हाई होकर रिपोर्टिंग हाई पॉजिटिविटी रेट डायली, और इंपॉर्टेंट स्टेट्स लाइक दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में ऑलरेडी दिन दिन से पॉजिटिविटी रेट इज गेटिंग हाई। फॉर दिस रीजन many states have entered partial lockdown as well as night curfews. Also, people traveling from these states के पास कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट और RT-PCR टेस्ट का सर्टिफिकेट कंपल्सरीली ले जाना चाहिए। All this reports सभी एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और चेक पोस्ट में ऑफिसर्स विल चेक। इन सभी क्षेत्रों में कोविड-19 का टेस्ट कैंप विल बी सिचुएटेड। If anyone in the temperature screening seems to be having COVID, immediately they will be tested. हम कोविड को स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ डिफेंड करने का साध्य है। मैं कंक्लूड करने की पहले एक ही बात बोलता हूँ, लेट्स स्टैंड अपार्ट एंड विन कोविड-19। थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद शर्वेश जी। प्रश्न संख्या 004, अपोजिशन पार्टी के किरण जी, आप आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 005, अपोजिशन पार्टी के शिवस्वरूप जी, आप आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। शुक्रिया स्पीकर महोदय जी। मेरा सवाल कृषि मंत्री श्री जिरण से है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब में हुआ रैली के बारे में पूछना चाहता हूं। आपने किसानों की इच्छा को क्यों अस्वीकार किया? आप उन्हें उनकी स्वतंत्र प्रदान कर सकते थे, पर आपने नहीं किया, क्यों? धन्यवाद। अब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्रीजन जी को इस सवाल के जवाब देने की अनुमति देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब देने का मौका देने के लिए धन्यवाद। पहली बात यह है, इस साल में 3 बिल प्रस्तुत किए गए थे। पहला बिल द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इस बिल से किसान को उनके फसल पर प्राइस का अश्योरेंस मिलेगा और बिजनेस ओनर्स किसानों को फार्म सर्विसेज जैसे कि एग्रीकल्चरल एडवाइस, प्रोवाइड बेस्ट सीड्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स प्रोवाइड करेंगे। दूसरा बिल द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। हमारे देश में केवल 6% किसानों को ही एमएसपी मिल पाती है। एमएसपी मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस। यह एमएसपी तभी मिलता है जब किसान एपीएमसी में अपने फसल को बेचता है।
जैसे आपको पता है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है। हमारे देश को फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलना तो चाहिए ही। यह वजह से हमने प्राइवेट में टैक्स निकाल दिया है और इस तरह किसान मार्केट में शामिल हो सकता है। तीसरा बिल, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल की वजह से हमने फसल को एसेंशियल कमोडिटीज से टेम्पररीली निकाल दिया है, जिससे किसान को प्रॉफिट हो सकती है। अब समस्या यह है कि प्राइवेट कंपनीज होर्डिंग के आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके अपने प्रॉफिट्स करके किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह सब रोकने के लिए मैं बिल में 3 बदलाव लाना चाहता हूं। पहला, अगर फसल का प्राइस 50% से इंक्रीज हुआ तो फसल को इमीडिएटली एसेंशियल कमोडिटीज में ऐड किया जाएगा। दूसरा, जो बिजनेस ओनर है या प्राइवेट कंपनी है नॉन पेरिशेबल आइटम्स को होर्ड करेगा तो उसका लाइसेंस और कंपनी सीज किया जाएगा और 2 साल का जेल दंड दिया जाएगा। तीसरा, प्राइवेट कंपनीज एमएसपी के नीचे दाम में फसल को नहीं खरीद सकते और एमआरपी के ज्यादा भाव में फसल को नहीं बेच सकते। बिल में इस बदलाव के बाद मैं इस बिल को पुनः प्रस्तुत करता हूं। अपेक्षा है कि इस साल इस बिल से एग्रीकल्चरल फील्ड इन इंडिया विल हैव अ बेटर फ्यूचर। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीजन जी। अब वो अवेलेबल नहीं है तो हम अगले प्रश्न को प्रोसीड करेंगे। प्रश्न संख्या 006, अपोजिशन पार्टी के प्रज्वल जी, आप आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। I thank the honorable speaker for giving me this opportunity. तो मेरा आज का जो सवाल है वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री तरुण जी के सरकार से है, स्पेशली द रेलवे मिनिस्ट्री से है। तो मेरे पास एक रिपोर्ट है जो मुझे रेलवे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट से मिली है। इंडिया को बहुत डैमेजेस हुए हैं और इन डैमेजेस का एक पार्ट रेलवे मिनिस्ट्री का है, जो है 38,017 करोड़ रुपए। इतना लॉस तो हो गया है, अब आप रोक भी नहीं सके तो आप क्या करेंगे? लेकिन इसको कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या हमारी जनता को आप सेफ और प्रोटेक्टेड ट्रैवल दे रहे हैं? इस प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए अध्यक्ष महोदय। हितेश जी प्लीज उत्तर दीजिए। धन्यवाद। अब मैं रेलवे मिनिस्टर हितेश जी को इस सवाल के जवाब देने की अनुमति देता हूं। धन्यवाद स्पीकर जी। To reduce the COVID-19 cases during the travel, we are regularly sanitizing all our compartments after every trips. We have kept sanitizers at every entry and exit of our stations. We have organized 3 to 4 officers to look after the social distancing inside the station. It is compulsory to wear a mask in and around the station. If not, they would be fined about 5,000 rupees. We are only registering those passengers who have vaccinated. If anybody in the temperature screening found to be having COVID, then they would be tested immediately. If the report is positive, then they would be transported to a nearby quarantine area. This pandemic has affected every fields of the world. Ours is no exception, even though we have taken some precautionary measures to overcome our losses. We are accepting online as well as offline registrations. We are transporting essential goods of private companies like oxygen, medicine, food products, and vaccination throughout the country. We have doubled the number of trips of each train. These are the steps taken by the railway. धन्यवाद। धन्यवाद हितेश जी। प्रश्न संख्या 007, अपोजिशन पार्टी के तेजस जी, आप आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। I'm grateful to the Honorable Speaker to bear with me and allow me to pose another question. My question this time is to the Foreign Affairs Minister and it goes like this. Approximately 1 month ago you had tweeted that 3 million doses have been imported from USA. That is old news and the vaccines have already come. Coming to the raw materials that must be imported from US, that has not come yet. What's the status of that? And we all know that 3 million doses are not enough to fulfill the vaccine drive in India.
If you think otherwise, please acknowledge the fact that India has 130 crore headcount. So, finally, two things: recombinant status and the way in which you will convince Russia or other countries, they are also friendly towards us, to send more vaccines is what I wish to seek information about. Thank you very much, Speaker. अब मैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर चिराग जी को इस सवाल के जवाब देने की अनुमति देता हूं। Thank you, Honorable Speaker. Tejasvi, here's the answer for your question. For Sputnik, 1,50,000 doses plus 60,000 doses supplied to India. By September end, about 3 million doses will be supplied in bulk. Those will be filled in India. In October, it's expected to increase to 5 million, and production in India expected to start in November. And we have also got permission from Russia to create Sputnik in India. And we have also sent D. Bala Venkatesh Verma to convince USA. And I like to even add that we can accept raw materials anytime soon from US. Thank you. धन्यवाद चिराग जी। अब मैं टेलीकॉम एंड आईटी मिनिस्टर रोहन जी को इस साल की नई आईटी बिल प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देता हूं। Thank you, Honorable Speaker. I, Rohan Prajwal P, as you all here know me as the IT Minister of India. Firstly, I would like to praise the great heights we have achieved till now as the ruling government. I have given my best in the IT department, and today we have another of our effort before this house. Before presenting the bill, I would like to inform you about the vision, the mission, and the achievements we have covered under the IT department. The vision of the IT department is always one and the same: e-development of India as the engine for transition into a developed nation and an empowered society. The mission is to promote e-governance for empowering citizens, promoting the inclusive and sustainable growth of electronics, IT and ITES industries, enhancing India's role in internet governance, adopting a multi-pronged approach that includes development of human resources, promoting R&D and innovation, enhancing efficiency through digital services, and ensuring a secure cyberspace. To achieve the mission, we have a few objectives also: e-government, providing e-infrastructure for delivery of e-services; e-industry, promotion of electronics hardware manufacturing and IT/ITES industry; e-innovation, also known as R&D, implementation of R&D framework, enabling creation of innovation R&D infrastructure in emerging areas of ICT establishments all over India; e-learning, providing support for development of e-skills and knowledge network; e-security, securing India's cyberspace; e-inclusion, promoting the use of ICT for more inclusive growth; and lastly, internet governance, enhancing India's role in global platforms of internet governance. The IT department under the ruling government has taken some major policy decisions, and they have reaped in many achievements. So let me start with a few achievements which we have achieved throughout the term. Point number 1. Digital payments BHIM UPI has continued to show upward trend by recording over 230 crore transactions with a value of rupees 4.31 lakh crore in the month of January 2021, which indicates the increasing acceptance of BHIM UPI as the preferred mode for making digital payment transactions. Point number 2. International Cooperation inaugural digital and tech working group meeting was held on virtual mode on April 27 to 28 on Zoom call. I represented India in the inaugural digital and tech working group meeting. India's position was shared on various ICT issues like internet safety, data free flow with trust, digital facilitation of trade, digital technical standards, and telecom diversification during the meeting. Point number 3. MyGov launch of Quantum Computing Applications Lab was actually launched on 19th April 2021 with the support of AWS. This lab is going to provide quantum computing as a service to government ministries, departments, researchers, scientists, academia, and developers to enable advances in areas such as manufacturing, healthcare, agriculture, and aerospace engineering. The quantum computing has the potential to solve many mathematical problems that are beyond the reach of classical computers and may lead to new breakthroughs that can transform chemical engineering, material science, drug discovery, financial portfolio optimization, machine learning, and much more. Point number 4. UIDAI has been organizing a number of workshops regarding Aadhaar authentication and offline verification,
explaining the main processes involved in authentication and verification. The Aadhaar paperless offline eKYC will be also be promulgated in all rural areas of India by 2022 April. During the month of January 2021, one workshop was conducted over video conference for various central and state government entities. Point number 5. National Informatics Center app Arogya Setu, which is a mobile application launched to aid the COVID-19 effort of the government. The application is based on contact tracing method and helps the government in identifying, monitoring and mitigating the spread of COVID-19 across the country. The app has so far had identified approximate more than 1 crore citizens who are at a potential risk of COVID-19 through Bluetooth contact tracing. More than 16.9 crore users have downloaded Arogya Setu app till January 2021. Information on the specific steps taken by the Ministry for Utilization of Space Technology. The Geographic Information System, also known as the GIS, based decision support system was established under National Center of Geoinformatics, which was approved by the competent authority for a total outlay of Rs 98.28 crore. Following are the key achievements which I have achieved under my department. We have covered 583 applications, which include 534 web applications, 49 mobile applications, and the number of central ministries, departments and agencies covered are 31. The number of states and union territories totally covered are 19. We have also made important developments under MEITY scheme. As on 31st April 2021, total number of Aadhaar generated are 128.11 crore against the projected population of 2020, that is 137.05 crore. Thus, the overall Aadhaar saturation across India stands at 90.32%. We would also ensure that we always maintain minimum government, maximum governance. Jeevan Praman, which generated till May 2021, are 443.88 lakh, and DLCs are 7,27,165. The decision of IT rules, which I am going to talk about now. My talk may be long, but I will ensure you that every second and every word will lead to the benefit of the government, of the people of India, and of every citizen in this India. The decision of IT rules 2021 is taken in consideration after there has been a skyrocketing number of cybercrime cases in almost every part of India. Women are especially the main targets here, as they are constantly threatened for many financial benefits. These criminals form a large network and very surprisingly walk free most of the time. We have also seen an increase in suicides caused due to cybercrime, and I am extremely sorry to tell you that again we have women as the main targets here. Many people like senior citizens have even lost their lives due to these criminals. There has been a huge increase in media piracy websites which have constantly threatened all cinema industries in India. मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी सरकार हमेशा यही चाहेगी कि इन सारी समस्याओं को पूरी से खत्म करे, और अगर पूरी की पूरी खत्म नहीं हो सकती है तो जितना हो सके उतना खत्म करना होता चाहेगी ही चाहेगी। इसलिए आईटी डिपार्टमेंट ने इस साल आईटी रूल्स 2021 को बनाया है। There are some main provisions of the IT rules 2021. Point number 1. All social media platforms with or above 50 lakh users in India come under the rules. In India, these platforms are Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat, and YouTube. Point number 2. All the above mentioned platforms must obtain a Special Head Monitoring Officer (SHMO) who has to submit a daily monitoring report to a government of the respective platform. I would always expect the reports to be ready at my office by 6 p.m. Point number 3. All complaints of users must be acknowledged within 24 hours of complaint. They are expected to be resolved within 15 days of acknowledgement. Point number 4. The legal sentence of 3-year prison or a fine of ₹1 lakh for any type of cybercrime shall be maintained. Point number 5. Section 79 of rules say when any platform fails to observe the rules, they will be charged under legal penal code. Further incidents may mean ban of the platform. Point number 6. Women's rights shall be protected exclusively by a special department headed by me. I would like to assure you that all tracing of criminals shall be done in a very aggressive manner. Point number 7. IT rules 2021 हर नागरिक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में 100% सेफ करवाएगा और उनके फंडामेंटल राइट्स को हमेशा मेंटेन करेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ. Point number 8. Section 79 Subject 1 of IT Act says, notwithstanding anything contained in any law for time being, a platform shall not be liable for any type of third-party data or communication link. If the platform is found to having any of these, they will be charged under legal penal code
and we would also like to inform you that further incidents may again mean ban of the platform. If the platform has a separate website for data collection, the rules will also apply on that platform, regardless of the number of users. The IT Rules 2021 look to bring a new change in the social media title. We would ensure enhanced protection of all netizens in India. I would love to inform you that the government has also assured you that the 5G rollout scheduled in November 2021 will be carried out in the smoothest manner as possible. We will love to cover as many cities and towns as possible. Estimated April 2022, 36 major cities in India will be covered under the 5th generation of technology, just in for a better future. इस बात से मैं अपनी वाणी को खत्म करते हुए अपनी सरकार की तरफ से इस सभा में आईटी रूल्स 2021 बिल को पेशकश करता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। धन्यवाद। अब इस सभा में यह पूछना जरूरी है कि आप सभी लोगों को इस बिल के बारे में सहमति है। अगर सहमत है तो अपने हाथ को उठाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा लोगों को इस बिल से सहमत है, तो हम इस बिल को इस सभा में अप्रूव करते हैं। धन्यवाद रोहन जी। अब हम अगले सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो है शून्यकाल। इसमें अपोजिशन पार्टी के लोगों को किसी भी तरह की जानकारी जानना चाहते हैं, वो अपने हाथ को उठाएंगे और प्रश्न पूछेंगे। अब मैं अपोजिशन पार्टी के शिवस्वरूप जी को प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं। शुक्रिया स्पीकर महोदय जी। मेरा सवाल कृषि मंत्री श्री सृजन से है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों के लिए अब तक क्या क्या फैसिलिटीज दिया है, क्या कुछ दिया उनके लिए? अगर दिया है वो तो अब तक उनके लिए रीच नहीं हुआ, क्यों? धन्यवाद। अब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर सृजन जी को इस सवाल की जवाब देने की अनुमति देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब देने का मौका देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री तरुण शेट्टी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 16 अक्टूबर 2020 को दूरसंचार के माध्यम से किसानों तक पहुंचने में मदद की, उन्हें पर्याप्त धन प्रदान किया और उन्हें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। यूनियन बजट 2021-22 के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY PDMC के लागू करने के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और सुनिए शिवस्वरूप जी, यह निश्चित करने के लिए कि सभी किसानों को अनुदान प्राप्त हो, अब यह किसानों के लिए आधार कार्ड के साथ रजिस्टर किया जाएगा और इस तरह अनुदानों का ट्रैक किया जाएगा। अब मैं इस वार्ता को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अब मैं अपोजिशन पार्टी के शिवस्वरूप जी को अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं। शुक्रिया स्पीकर महोदय जी। मेरा सवाल आईटी मिनिस्टर श्री रोहन से है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये पेगासस स्पाईवेयर जो है, इससे बचने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिया है। धन्यवाद। अब मैं आईटी मिनिस्टर रोहन जी को इस सवाल के जवाब देने की अनुमति देता हूं। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। मैं ऑपोजिशन पार्टी और उनके सदस्य शिवस्वरूप जी को ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस स्पाईवेयर के लिए ऑलरेडी गाइडेंस इशू कर दी है। आई वांट टू कीप दिस सिंपल एंड स्ट्रेट। जैसे ही भारत में पहला स्पाईवेयर का विक्टिम रिपोर्ट हुआ, मैंने खुद एक इमरजेंसी मीटिंग जारी की, जिसमें हमने इस स्पाईवेयर के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढे। We have figured out two possible answers to Pegasus.
the government of India has decided to lay down the Telegraph Act of 1885 in this emergency. According to this act, the government of India are allowed to record the hacked data of the victim only and specifically only for tracing purposes. इससे हम Pegasus की effect को कम जरूर कर सकेंगे. We have also decided to bring the Public Union for Civil Liberties Act 1996 to immediate effect. According to this, it states that in simple words, tapping of any device is a serious threat to the citizen of India. A citizen of India who is involved in inflicting more than 7 such cases shall be immediately sentenced to life imprisonment by the Affidavit of India. So I would like to mention to all the hackers and cybercrime committers out there, beware before you act in India. Also speaking, I and the government of India always advise every citizen to be technically safe and sound in the midst of Pegasus. हमेशा सतर्क रहिए और ध्यान रखें कि नजर हटी दुर्घटना घटी. You can always download the free antivirus software always available on the internet, but remember, no software can save you fully. प्लीज हमेशा यही ध्यान रखिए कि आपके फोन को किसी और के हाथ में नहीं दे दीजिए. अपना पासवर्ड यूजर नेम कभी मत रिवील कीजिए. Be safe in every step you take online and make great and thoughtful decisions. The rest assured, the government of India would love to eliminate Pegasus as soon as possible along the people of India. Remember that the government is always here to solve any of your queries and problems. Thank you, Honorable Speaker. धन्यवाद. अब मैं अपोजिशन पार्टी के प्रज्वल जी को प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं. अध्यक्ष महोदय को मेरा धन्यवाद. तो ये मेरा जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है. तो मेरा सवाल सर्वेश जी से है कि ये कोविड वैक्सीन जो आए हैं, मे इट बी कोविशील्ड, कोवैक्सिन, स्पुतनिक और चाहे फाइजर हो, किसी ने भी अभी तक दे हैव नॉट कंप्लीटेड एनी ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स. तो कोई भी भरोसा नहीं है कि दे आर टोटली सेफ फॉर यूज. और मैं ये भी उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके गवर्नमेंट ने इन सारी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के नाम पर ही डिक्लेयर किया है. तो आप क्या बोलेंगे? 26,000 एडवर्स इवेंट्स और 488 डेथ्स हुए हैं आपके इस डिसीजन के कारण, वैक्सीन के कारण इतने सारे डेथ्स और एडवर्स इवेंट्स हुए हैं इस देश में. तो मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं. धन्यवाद. धन्यवाद. अब मैं हेल्थ मिनिस्टर सर्वेश जी को इस सवाल के जवाब देने की अनुमति देता हूं. धन्यवाद. सुनिए प्रज्वल जी, for vaccines and medicines, approval is granted only after an assessment of their test of their safety, efficiency based on data from trials. In fact, approval from the regulator is required to every stage of these trials. This is a long process designed to assure that the medicine or vaccine is absolutely safe and effective. Now we are waiting for final approval to be granted only after the completion of the trials and analysis of full data. Until then, emergency use authorization (EUA) allows the medicine or the vaccine to be used on public. So I assure all the public that the vaccines are very much safe compared to the first doses. Thank you. अब मैं अपोजिशन पार्टी के शिवस्वरूप जी को प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं. शुक्रिया स्पीकर महोदय जी. मेरा सवाल आईटी मिनिस्टर श्री रोहन से है. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पता है ना? तो आपको ये भी पता होगा कि यूट्यूब पे वीडियो डालने से पैसा भी मिलता है. हाँ, हमारे देश के यूथ्स को ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए 80% of the youth has ignored their academics and are only focusing on the YouTube. So it is like a brain drain in India. So what are the steps you have taken to control this, or what will you take to control this? And in another 30 to 35 years, there will be more YouTubers than doctors. So what's your take on this? Thank you.
अब मैं टेलीकॉम एंड आईटी मिनिस्टर रोहन जी को इस सवाल के जवाब देने की अनुमति देता हूं। Thank you, Honorable Speaker. I would like to proceed to this question by saying that YouTube is also one of the social media networking sites which have been almost very popular in India. जैसे हमें पता है कि already इंडिया में से ही बहुत सारे I would say like thousands and crores of YouTube channels already been built by people. But I would like to ensure you that we are always maintaining cyberspace such that no adult content or inappropriate audience should not be visible to the smaller children and teens. I would like to also tell you that the YouTube channels which have already like gained popularity are above 18 plus. Like they have been controlled by adults and not by children. I'm talking about the brain drain. We have left the fundamental rights and duties to the people of India. It's their choice to choose a career. Doctors, your statement of saying that YouTubers will be more than doctors is actually true, but we cannot hinder their fundamental rights and duties by saying that you should not create any more channels. It is their freedom of speech to express and show their talent on YouTube or whatever they do, be it gaming, entertainment, or any other forms. I would like to inform you that the brain drain will be continued as according to 30 years ago, you say that there will be more than lakhs of YouTube channels already based in India. So this is my answer. We have to ensure that all cyberspaces are maintained safely. The YouTube channels which are already based in India will be secured by our government. As I already mentioned, the IT rules cover this YouTube app also, and we would ensure a safe and secure social media website for every citizen of India. Thank you, Honorable Speaker. If YouTube is to showcase talent, then why don't you just demonetize the channel? Like only let it be only for the showcasing talent, not for money. So YouTuber has been as being a YouTuber is also a career choice. Like if you become a doctor, if you become an engineer, you earn money. We also would like to provide the same monetization. It's not provided by us, but by the search engine Google. So I would like to say that we have to ensure that every channel is monetized, and we would also ensure safe and secure content for every YouTube channel in India. Thank you. But it's not worth for the country. We would like to say that some YouTube channels have, however, proved that popularity has been across the world. We have seen many YouTube channels which have gained like 20-30 crores of subscribers already, and we would love to inform you that T-Series is the most subscribed YouTube channel in the world. If you know it, Shiv Sarup ji. इससे हम प्रूव करते हैं कि India will be on top in the social media site. We would like to make India's mark in the social networking sites also. But what is the economical benefit of India? So how are we gaining money from monetizing YouTubers, you say? So when YouTubers like they get monetization, we get approved by the UNESCO saying that entertainment rules are maintained, and India has specific rules for freedom of speech, freedom of expression, freedom of liberty. Monetization means in turn economy for India. How? Because every citizen will be monetized and they will get money for their own personal benefit or for the other users. So we would like to ensure unemployment is decreased, no unemployment, and that may be leading to decreased brain drain also. Thank you. अगर आपको सहमति है तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ. But there is no employment academically. Why can't we consider being a YouTuber as also a career? There have been like some people are like based already like in 2021 they are already 9 years ago they have created a channels and they're actually popular. So we will allow people what they want to like, what they want to love. We should never curtail people to their talents. That is my faith, that is my believing. A YouTuber can showcase his talent, but what is the need of money in there? He can just show his talent if he can't. Not all YouTubers showcase their talent only for money. Yes, everybody does. No, some channels always like some singing channels, some music channels. They want to showcase their talent to the whole audience, not only India, for the whole world. I'm saying it. Like anyone can do the video. Every channel is monetized. Like the singing and dancing channel is monetized. Every channel is monetized, and there is a specific limit, right? It has to be 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So if they achieve that, they get monetized. So if people are showing the talents
and they're actually being monetized. Why wouldn't somebody choose YouTube as a career? Yeah, YouTube cannot be a career. I'm asking why is the money needed there? शिवा स्वरूप जी, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया है, तो नहीं मिला है। आप एक ही प्रश्न बार-बार पूछ रहे हैं। क्योंकि वो सही जवाब नहीं दे रहा ना, इसलिए। I think I've made my point like 3 to 4 times now. We can consider YouTube as a career since there are like more than 30 crore people already based off India according to my data. So what happens? It's not 30 crore. It's maximum is 3 crore right now. It's 30 no, million. that's what I'm saying. Like in 30 years, to say, right, the future graph will increase, the trend will increase. I'm not saying that being a YouTuber is a bad choice for a career, but it is also a choice for career for the people of India. That's my point. I did not get my answer, but anyways, I'll let it go. Thank you. तो ठीक है, ये थोड़ा मामला बहुत सीरियस था, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी के लीडर तेजस जी को प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं। Indeed, it is out of pure luck that the speaker is so tolerant and allowing me to pose a question once again. This will not be a debate. I will give you all the details. You just need to give an yes. So my question is to the PM actually, pretty much. Okay, so let us start. Let me satisfy my spirit of inquiry. So let us start. The first question is, the price of LPG fuel is increasing. We all know that rise in price gives rise in demand, which affects the price of necessary commodities also, like food grains. Also, India's population is increasing, competition with China in this too. So, looking at the increase in demand for this LPG, fuel, etc., which will affect all the food grains and also some of the necessary commodities, we may soon declare a food crisis by 2023 or 2024. When me and my party were ruling, we were generous to allow even price regulations on food grains. But there is no regulation of prices in the current ruling party. Take measures against this, please. So, second one, AI, automation, bright future. No. This affects employment. How? Let me give an example. Autonomic cars throw drivers to an unemployment stage. Same happens when machine replace skilled factory workers. Soon, robots will replace us everywhere. Brain drain will go up like an ISRO rocket, and maybe we will be confined to our homes by 2050. So to prevent all this, will the government take measures soon? Just a yes will do, because with that yes, I can target you again and again. But mind it, people are listening. So, I know these are too far-sighted, but please, do not give me any problems when my party wins in the future. I need to keep my people happy. So hence I, Tejas Vijay, proud citizen of India, leader of opposition party, voice of the people, put a stop to my words. Doctor. अब मैं हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री तरुण जी को इस सवाल के जवाब देने की अनुमति देते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Manya Tejas ji, we welcome your queries which are related for the betterment of country. And as per your query goes, you told that the LPG rates are increasing, but it's only due to the inflation which is occurring today. And there are problems which are occurring due to the COVID-19, and we aren't able to freely transport the LPG as it went 2 to 3 years ago. And as per the brain drain queries, we are doing our best to limit this, and yes, we'll continue doing it. Thank you. Anyways, the automation part was not answered, I suppose. See, as per the automation part goes, you told that the skilled factory workers are being unemployed, but also you could say that while developing a new AI, there are many people working on it. Doesn't it give new employment opportunities to others? You know, by stating this factor,
See, the problem of people is, as we move on, we are getting lazy and lazy. We are just giving all our jobs to robots. And you are telling about the factory workers. And the factory workers from maybe 1970s, they have been factory workers only due to thoughts, due to our thoughts, remember. Due to our suppression, we suppress the people, we do not allow them to rise. So that's why still some people do not get full education, girls also do not get full education. So these factory workers remain as factory workers. Their sons, their daughters, they work as laborers. So looking at the trends, I think even we will be replaced someday. Even our speaker may be replaced. A robotic speaker will come who will just have a feed, and then this guy will ask the question and then over. Because it is due to our laziness. This automation will be a evil. It is not a necessary evil. It will become an evil. So you have to be in such a way that you balance the automation as well as the people. And even our population is increasing like sky high, you know. So tell me the measures you are taking. As per the measure goes, I answered you that as the automation increases, there are other opportunities that increase along with it too. And as you said that a speaker might be replaced by robot, but some stuff are related can only be done by humans, because you can't replace farmers with robots, stating that they can do perfect jobs. There are things that only humans can do perfectly, and they know their jobs. And we'll assure you that we'll take necessary measures to prevent this evil from occurring. Thank you. Well, let's hope for the best. But when my party rules, this all problems will not be there. Please make me win. Okay, let's wait for the next elections. तो यह संवाद बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि तेजस जी को इस आंसर से बहुत सेटिस्फाई है। मुझे लगता Let us है look at the future speaker. How the future goes, the answer will be given. करेक्ट। तो और कोई सवाल पूछना चाहता है? नहीं है। तो इस अनुवाद से शून्यकाल यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर। धन्यवाद। But before this, I would like to conclude this wonderful session by rendering a few words. I would like to thank all of you for your support. The sole aim of this mock parliament was to put forth the grave problems of our nation, and the solution of how to tackle it was to be put in front of the audience. Often we have seen in the parliament how the opposition party members get carried away by the emotions and spoil the decorum of the house. But we must remember that our behavior shows our thought and characters. We must be privileged that our beloved citizens have showed faith in us by giving the chance to serve them. We believe we have kept our words and served to their expectations. I thank our respected principal ma'am and the management staffs for their constant support and allowing us to showcase our talent through this beautiful platform. And this event would not be a successful one without the sheer dedication of my dear friends. I thank you all. And hence, on a positive note, we end the session and hope this session has ignited the spirit of nationalism in all of us. Thank you one and all. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. भारत माता की जय। धन्यवाद स्पीकर। भारत माता की Long live India. धन्यवाद स्पीकर जी। धन्यवाद स्पीकर। धन्यवाद स्पीकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। ये सेशन हम अब अजोन करते हैं।